Okay. So next topic is animation effects. PowerPoint allows you to animate text, objects such as clip art, shapes, and pictures. Animation used on a slide draws with the audience attention to specific content. It also makes the slide easier to read. PowerPoint consists of several animations that can be used to make the text or object appear on a slide, exit a slide, or emphasize the text on object present on the slide. The motion path can be used to create a customized animation. All the animations are categorized in four types. The one is entrance, emphasize, exit, and motion paths. एनिमेशन क्या होता है? एनी गेसेस? मीन्स आपने जो भी अपनी स्लाइड में टेक्स्ट ऐड किया है, अगर आप उसमें कुछ मोशन ऐड करना चाहते हो, मोमेंट ऐड करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड एनिमेशन. ओके, सो फर्स्ट इज एंट्रेंस. These animation effects control the entrance of object on the slides. ओके, कि अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट आपका स्लाइड पे एंटर कर रहा है तो उसका एंट्रेंस का क्या मोड होना चाहिए, किस वे में आपको उसको एंटर करना है, दैट इज कॉल्ड एंट्रेंस. नेक्स्ट इज emphasize. These animation effects emphasize the object on the slide on mouse click. Next is exit. These animation effects control how the object exit from the slide. Then last one is motion paths. These animation effects are similar to the emphasize effects, except the object moves along a predetermined path in the slide. Pihu, why you are speaking? Please keep your phone on mute mode. Okay, so in short we are having four type of animation. एंट्रेंस एनिमेशन, जब आपका टेक्स्ट एंटर कर रहा है आपकी स्लाइड में तब आपको उस पर कौन सा इफेक्ट अप्लाई करना है. एम्फेसाइज मीन्स वो एंटर हो चुका है, एंटर होने के बाद आपको उसको कैसे हाईलाइट करना है आपकी स्क्रीन पे, दैट इज कॉल्ड एम्फेसाइज. देन एग्जिट मीन्स सपोज आपने लिखा वेलकम अपनी स्क्रीन पे, अब वेलकम एक बार होता है, फिर आप उसको हटाना चाहते हो तो आप उसको किस इफेक्ट के साथ अपनी स्क्रीन से हटाना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड एग्जिट एनिमेशन. लास्ट इज मोशन पाथ. इट इज सिमिलर टू द एम्फेसाइज बट देर इज अ वन डिफरेंस. मीन्स आपको जैसे कि आपने वेलकम लिखा तो वेलकम में डब्ल्यू कैसे आ रहा है, ई कैसे आ रहा है, मीन्स कुछ आपने पाथ दे दिया कि आपको सर्कल में आपका वेलकम दिखाना है या कुछ जिग जैग में दिखाना है. सो ऑल दोस मोशन यू कैन applied with the help of this motion paths. Now, these are the following steps like how we can apply animation to an object. First one is select an object. Obviously, अगर आपको animation लगाना है तो आपको एक object select करना पड़ेगा. ठीक है? So, in first step, select an object. Next, on the animation tab in the animation group, click on more button. The animation gallery with all type of animation effects will be appear. Third step, click to select the desired animation effect. The selected animation will be applied to the object. A small number close to the object appears to show that the object is animated. The slide in the slide tab will also have a star symbol before it. अब इसमें क्या है, इसमें कुछ ये animation इसने add किया. Suppose this is the object they have added in their slide. Now animation have effect option which you can access by clicking the effect option drop down button in the animation group. Students, if you are having any doubts, no need to worry. We will do the practical for all these steps. Okay. So first I will complete the reading part. Then we will do the practical. Now, adding multiple animation to an object means एक ऑब्जेक्ट पे आप एक से ज्यादा एनिमेशन भी अप्लाई कर सकते हो. जैसे कि आपने उस पे एंट्रेंस लगाया तो एंट्रेंस के साथ आप उस पे एम्फेसाइज और एग्जिट भी अप्लाई कर सकते हो. When you select a new animation for an object, the existing animation will get replaced. However, it is possible to add multiple animation to an object. You can add another animation by selecting the animation effect from drop down gallery.
of add animation button in the advanced animation group in animation chat. So now what we will do, two more lines are here. When the object has more than one animation effect, it will have different number for each effect based on the order in which they are occur. Suppose आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे लगाया एंट्रेंस, तो उसके आगे नंबर वन स्टार लग के आ जाएगा कि आपने नंबर वन पे एंट्रेंस लगाया। सेकेंड एनिमेशन के लिए नंबर टू आ जाएगा कि टू पे आपने एग्जिट वाला एनिमेशन अप्लाई किया है। You can reorder the animation by using reorder animation option in timing group of the animation tab. Keep in mind, using too many animation in a slide can distract the audience of your presentation. So it is not a good choice to apply too many animation on your content. Okay. So now what we will do? We will do the practical for animation effects. So we will move back to our application. First of all, what we will do? We will suppose this is our presentation. Okay. And I will delete this picture and we will keep this one. I will insert new slide and from this slide we will add some pictures. Ma'am, Yes, tell me. Suppose this is the picture we have added. Okay, now we want to apply animation on this. ma'am, I am not able to see screen. Who is not able to see? Rishabh. Yes, ma'am. Everyone else is able to see? Please Ma'am, confirm. I am Screen able is to see. stopped. I'm sorry. Ma'am, screen is stopped. Paused. Ma'am, screen is stopped. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is. One Ma'am, second. screen One is second. hang. Okay, okay. I will share it again. No need to worry. Is it visible now? Yes, ma'am. Okay. So what we have to do? So this is the picture and we want to apply some animation. So here is your animation tab. Okay. As we have applied transition on the slide, in the similar way, you can apply animation on the object. So this picture is object for your slide. So what we have to do? Suppose from here you can see these are different animation. Okay, I will just show you. First one is none, then we have entrance, emphasize, exit, okay, and motion paths. So these are different available. So suppose you are selecting this one. This is grow and shrink. Means ये एक बार बड़ा होगा फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा. तो जैसे ही आपने इस पे ग्रो एंड श्रिंक लगाया, सी नंबर वन मीन्स आपने इस पे एक एनिमेशन अप्लाई किया है. अब सेम इमेज पे आप एक और एनिमेशन भी अप्लाई कर सकते हो. ओके, सपोज आपको एक एग्जिट वाला करना है, तो एग्जिट आप किस वे में करना चाहते हो? बाउंस में. तो हमने ये बाउंस सिलेक्ट किया. Now what I will do, I will play this slideshow. So on this slide we have applied the animation. Okay. So this is the animation. Not understand? No, Okay. ma'am. No, Okay. ma'am. Okay, okay, I will tell you. तो आपने क्या किया? I इस understand. इस स्लाइड पे आपने क्या लगाया? एनिमेशन लगाया. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ग्रो एंड श्रिंक का लगाया, देन अपने बाउंस का लगाया. तो जो भी आप मोशन उस पे लगाओगे वो आपका एप्लीकेबल होगा. ओनली दिस थिंग वी हैव डन. How? ओके. Okay, ma'am. How to do animation? Okay, I will tell you again. You have to do nothing, just click on the object. So this is your object. Okay, go here. This is the animation option available. Stop playing with the share screen, students. You all are observing by the principal, ma'am. So make sure you are behaving well. Okay, so just click on the object.
Now go in the animation tab and whatever you would like to path. So this is a custom path or loops or shapes. So whatever you will means अगर आपने सर्कल शेप किया तो ये इमेज देखो सर्कल शेप में घूम रही है. अगर आप लूप करोगे देखो लूप में घूमेगी ये इमेज. टर्न्स में करोगे तो टर्न में. मतलब जो भी आप सिलेक्ट करोगे एनिमेशन पाथ आपकी वो इमेज आपका वो ऑब्जेक्ट उसी ही शेप में घूमेगा. अगर आप स्पिन करोगे तो ये घूमेगा देखो ऐसे. So this is called animation. So when I will just play this thing, see. So we have applied animation on this screen. तो आप देख सकते हो ये इमेज आपकी अब घूम रही है, स्पिन में है. Is it clear? So this is your It is clear. Yes, ma'am. very good. Too easy. Okay, so if you are having system at your home, you can do this practical and send me the video. Okay, with different options available. Okay, students. Okay, ma'am.